In previous video, we have started a new chapter of human reproductions of class 10th. In this video, we will discuss some more important parts of reproduction about the human and plants. Okay, but before starting the reproductions about the plants and humans, firstly, we will discuss the most and important beneficial parts of human reproductions. Sexual reproductions are generally held in humans, okay, and animals also, but we will discuss reproduction in flower in next video. Okay, there is a two types of reproductions we are going to discuss, and it is your last topic. After that, there is a one topic will remain, and that is the reproduction in flowers. Okay, and we have completed most of the parts, like we have studied grafting, layering, okay, vegetative reproduction and propagations also. Okay, now next we are going to discuss the most important and valuable topic of today, and that is reproductions in humans. Reproductions in humans is the most important functions to producing their young ones एंड इन्हांसिंग देयर जनरेशन बाई जनरेशंस. ठीक है, अपने जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए, अपने पॉपुलेशंस को इंक्रीज करने के लिए जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आर डू रिप्रोडक्शंस. ये रिप्रोडक्शंस करते हैं एंड दे हैव टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशंस टू हैंडल ऑल द थिंग्स, ताकि वो सारी चीज़ों को कवर कर पाए. ये रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल पार्ट है. एंड जनरली रिप्रोडक्शंस इज सेक्सुअल मोड इज कंसिस्टेड बाय टू पार्ट्स. ठीक है, दो पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि एक होता है मेल एंड दूसरा होता है फीमेल. ठीक है, मेल एंड फीमेल, कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल, देन रिप्रोडक्शंस इज जनरली टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, एंड एनिमल्स आल्सो, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. But today we are going to discuss the most important, and we will discuss detailed manner of male reproductive system. In your book there is a several diagrams has given there, but there is a no space to draw a diagram, but I will make you understand all the things. During the age of teen, the most of the development of body parts is generally held in whether it is boy and girls. जब बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो जब टीन एज में, जब मैच्योरिटी एज में आते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंशिएटेड ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. उनके बॉडी ऑर्गन्स में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, लाइक उनके वॉइस, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, उनके बिहेवियर, उनके हार्मोनल चेंजेस, उनकी ग्रोथ, सारी चीज़ें दिखती है. ठीक है, एंड दीज आर ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेजेस. वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव फेजेस में आते हैं. बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट and elaborated topic, and that is male reproductions. After that we will also discuss the female reproductive system. In male reproductive system, there is the most important role played by testes and penis. We know that the penis is a sex organs of male. Okay, it means they do an intercourse by using that organs, and it is the long and cylindrical structures are there. Okay, after that there is a testis, pair of testes are formed which are folded in scrotum. testis जो है जनरली एक scrotum नाम के पाउच में होल्ड होता है, जो कि बैग और साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, लाइक दिस. ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें स्क्रोटम को होल्ड करके रखता है, एंड स्क्रोटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट बिहेव एज अ बैग एंड प्रोटेक्टिव लेयर. ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है. सपोज इफ देयर इज अ नॉट अ स्क्रोटम, तो इनकी जो लेयर होती है टेस्टिस की, वो काफी वीक होती है एंड दैट विल ब्रस्ट आउट. ये प्रॉब्लम करती है. ठीक है, एंड the most important in most of the board exams, generally question is asked that why the testes are found outside the abdominal cavity. जो testes होती हैं, males body की बात करता हूँ, are found outside the body cavity because due to the maintaining of body temperatures, the testes produce sperms, and if the temperature is not available, it means the testis formed sperm is not regulated and all the sperms will be denatured. जितने भी sperms बनेंगे वो सब के सब denatured हो जाएंगे. And mostly in male body the sperms are generally held in testes, and testes play an important role in a sexual reproductions. Okay, why? Because when the male produce sperm and female produce ovum, both the sperm and ovum, male produce sperm and female produce ovum, and both sperm and ovum conjugated and they form a proper zygote, and zygote which leads to the fertilization, and fertilization then further development takes place in uterus, and after that it goes to the embryo and the formations of baby takes place, and it takes approx 9 months to deliver a baby. Okay, we know that all the things. Okay, now we are
Testes is an important part, and testes, we know that there is a pair of testes are found in the male sex body. Okay, now testes play an important role to producing sperm. All the sperms are generally prepared in testes, and testes are found outside the body, and it is a packed in a scrotum pouch. Scrotum के pouch में packed होते हैं, ठीक है, and provide protective layer, and also it maintain the temperature को भी maintain करते हैं. And after that we have discussed the penis, and the most important part, what's our difference is a pipe, it's a junctions which is connected from penis to testis. ये क्या होता है जनरली, पेनिस से टेस्टिस से अटैच होता है, लाइक दिस, ये इस प्रकार का ऑर्गन्स है सपोज, ठीक है. तो ये है, दिस इज द कॉल्ड टेस्टिस एंड दिस इज कॉल्ड वासा डिफरेंशिया. तो जो वासा डिफरेंशिया जनरली ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म थ्रू द जंक्शंस ऑफ दैट, ये इसी जंक्शन से स्पर्म को रिलीज करता है थ्रू द पेनिस इन द मेल बॉडी. That time the hormonal changes in male body, and that is called testosterone. And testosterone, we know that it is a male sex hormone. Most of the time the board exams ask the question this, what is the male sex hormone? The male sex hormone is called testosterone, and similar that in female the sex hormone is also there, and this is called estrogen or progesterone. ठीक है, जैसे हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो इनमें टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द टेस्टिस, देन पेनिस, vasa difference, and testosterone hormone, and this is the regulating hormone, and they provide a proper and functions of the sperm. Now we are going to discuss the female reproductions. Female reproductions is a generally important task for females, and there is ovaries, and ovaries are generally important part to produce the ovum, and the egg or ovum, we know that it is the most important part, because without ovum and without egg the fusion of male and female gamete is not possible, and it is generally prepared in the ovaries also. Now next, vagina is the layer where the intercourse of sexual reproduction can be taken place. यहाँ पे sexual reproductions के process होता है, और ये सब जितने भी होते हैं, these are the parts of female reproductive system. ये female reproductive system का important part है, ठीक है. Now इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं विच इज फाउंड इन फीमेल बॉडी, दैट टर्म्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स है विच इज फाउंड इन फीमेल साइड, ठीक है. मेल की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन होता है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the male and female they both produce the gamete, and it is the haploid in number. ये haploid होते हैं, ये सिंगल एंड, ये सिंगल एंड. जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2n में डिप्लॉयड होता है, ठीक है. जाइगोट जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड के फॉर्म में होता है, ठीक है. n combine to form 2n, and this is called zygote. एक मेल बॉडी से और एक फीमेल बॉडी से, जब भी यहाँ से मेल बॉडी से स्पर्म और फीमेल बॉडी से ओवम, जब ये रिलीज होके आपस में ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हेन दे गेट टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट. जाइगोट के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आफ्टर दैट ऑल द प्रोसेस विल बी स्टॉप्ड. फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, एंड द बेबी विल नॉट बी फॉर्म्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. During the sexual reproductions in humans, firstly they all are aware about the sex educations. Among the sex education is most important. Without that education, most of the pupils do wrongly, okay, do wrongly things, and they leads to the several diseases like AIDS, syphilis, ठीक है. These all are the diseases caused by the bacteria. This is caused by bacteria, and this is caused by virus. Okay, but both the diseases are generally connected with the sexual intercourse. So firstly, if the awareness among the sex education is not considered, it means most of the peoples are generally feel like this type of disease. और ये तो जो disease है वो generally it is uncurable. ये uncurable है या incurable उसको बोलते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है. Doctors are generally give only the precautions. Doctors सिर्फ और सिर्फ इनमें precautions देते हैं, जबकि syphilis का इलाज जो है possible है, ठीक है. Now we have to use second point, and that is
use of contraception method during the sexual intercourse, we have to avoid the multiple partners. Okay, multiple partners means hota hai we have to use contraception methods, like different types of barrier methods are available in the market, and the male and female both the things are available, and they use and they do intercourse by avoiding this type of diseases. वो उस सारी चीज़ों के contraception methods का use करते हैं जिससे उनको होने वाली एड्स और सिफिलिस और गोनोरिया जैसी जो बीमारी है उससे वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम कंट्रासेप्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोइटस होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवम होता है, वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो पाता है, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल होते रहती है, लेकिन उसमें डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन। जो भी सेक्स ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर वे में नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज दे डू नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इनको बिना नॉलेज के अगर वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इन फ्यूचर द बोथ मेल एंड फीमेल गेट द एग्जैक्ट एंड प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम लीड्स टू डेथ। वो लीड्स टू डेथ मतलब वो मौत के पास पहुंच जाते हैं, जो कि मैंने अभी एक डिजीज का नाम बताया, इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज द टफ मोस्ट डिजीजेस विच आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये पूरा का पूरा आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, एंड दिस इज द इनक्यूरेबल, एंड वी हैव टू टेक ओनली प्रिकॉशंस ओनली। हम सिर्फ उसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं क्योंकि उसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में टच करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ मेल एंड फीमेल द मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर जनरली गोइंग टू डेवलप होते हैं। डेवलप होने के साथ साथ उनको बहुत सारे अवेयरनेस की जरूरत होती है। अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन। इन 8th क्लास वी हैव स्टडीड द एडोलेसेंस स्टेज। हमने एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा है। ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन्स डू मिस्टेक, बहुत सारी गलतियां करते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ मिस्टेक लीड्स टू सीवियर प्रॉब्लम। ये जो मिस्टेक्स होती है वो बहुत आगे चल के काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो हियर I thought that these all are about the reproductive health. If you have any problem, you can comment me and ask me. Okay, now we are going to discuss some most important part in your NCERT CBSE book. It is written here, if what happens when the egg is not fertilized। अगर egg जो है fertilized नहीं होगा तो क्या होता है? When the egg means egg is found in female body, not in male में जनरली स्पर्म होते हैं। एग और ओवम दोनों एक ही नाम है, ये जनरली फीमेल केसेस में होते हैं। तो आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन इट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इट मींस द एग डिस्चार्ज थ्रू द वेजाइनल कैविटी ऑफ द मेल बाय कंसिस्टिंग ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यू इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो एग जो है रप्चर्स होके ब्रस्ट आउट होके ब्लड के साथ और म्यूकोसल टिश्यू के साथ एक साथ ज्वाइंट होने के बाद वो वेजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथली, ये मंथली होते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इट रिपीट्स इन एवरी 28 to 29। ठीक है, ये हमेशा जो है रिपीट होते हैं मंथली के हिसाब से, एंड वी विल आल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ है शायद, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट रप्चर्स and it consists with blood and mucosal tissue and it discharges from the vagina of the female body। क्या होता है डिस्चार्ज? मतलब होता है कि ये ब्लड के साथ और म्यूकोसल टिश्यू के साथ कनेक्टेड होने के बाद ये फीमेल बॉडी के थ्रू ये बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो we have completed the important part of sexual reproduction in human beings in a detailed manner. In next video we will study the most important parts of reproduction in flowers. Okay, but further I started the chapter, you all have to study properly all these things, and cell pollination and cross pollinations also you all have to discuss. This is your homework. Okay, thank you students.